पुराने टाइम में जो इंडस्ट्रियल एज थी, जब फैक्ट्रियां लगी थी, तो तब क्या थिंकिंग थी कि हम लोग जो कर रहे हैं उसी को और ज्यादा कैसे करें, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ज्यादा लीड्स आए, ज्यादा कन्वर्जन होगा, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा इनकम हो जाएगा। पर अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो भी कुछ आप अभी कर रहे हो उसी को अगर हम ज्यादा करें, आप ऑलरेडी 9 आवर्स काम कर रहे हो, आप कहते हो कि मैं 9 आवर्स की जगह मैं अब 19 आवर्स काम करूंगा, डू यू थिंक इट विल मेक यू सक्सेसफुल? व्हाट डू यू थिंक गाइस? जो भी ऑलरेडी कर रहे हो उसी को ज्यादा करने से क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? व्हाट डू यू थिंक? So, like, no, not at all. You have to do something different. कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना पड़ेगा, राइट? अगर जो लोग सब कर रहे हैं वही करते रहोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए, फैक्ट्री वर्सेस फार्म। अब एक बहुत बड़ा फार्म है, 200 एकड़ का फार्म हाउस है, ठीक है, वो कितने भी मेहनत कर लें और कितना भी टाइम लगा लें, ऑन दी अदर एंड एक छोटी सी फैक्ट्री है, सिर्फ 200 स्क्वायर यार्ड्स की फैक्ट्री है, बट वो फैक्ट्री जो है वॉचेस बना रही है। सपोज स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री है 200 स्क्वायर यार्ड्स में, और वो ओमेगा की वॉचेस बना रही है। डू यू थिंक कि ये 200 एकड़ का फार्म कभी भी उस फैक्ट्री की आउटपुट को बीट कर पाएगा? नहीं बीट कर पाएगा ना। सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज दैट कि इट इज नॉट कि व्हाट कि आप उसी को ज्यादा करोगे, ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो उससे डिटरमाइन होता है कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। सो it is not necessary. So I will use a mix of Hindi and English. So you need to do more value addition. That is right. So the word is value addition. So if you look at gold versus Bitcoin, okay, so which one has grown faster? कौन ज्यादा तेजी से बढ़ा है, गोल्ड या बिटकॉइन? So we are now in the age of innovation. Okay, ideas have more value, okay, than money. So in the age of innovation, Bitcoin, there is nothing backing Bitcoin. Bitcoin के पीछे कुछ भी नहीं है. Okay. So in the innovation age, digital assets will lead to more income and they create more value. Okay. If you want to have more income, you need to have digital assets. So from land to factory. So earlier it was कि जिसके पास ज़्यादा land है, people with more land can earn more. Then you have a bigger factory, you can earn more. Now there are people with digital assets. So for example, Byju's. So Byju's is into online education, and they purchased another company, big company, Akash. Akash was into training, and they have these big institutes. बहुत सारे उनके multiple location में institutes हैं. तो उन्होंने उसको खरीद लिया, जबकि बायजूस का तो एक जगह पे भी, एक भी लोकेशन पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं था. सो यू सी व्हाई? बिकॉज बायजू हैज डिजिटल एसेट्स. इट हैज गॉट दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इट कैन केटर टू hundreds and thousands of students. So that is what is happening. Okay, so what are assets? So asset is something that provides current, future or potential economic benefit to any individual or any entity. Okay. तो एक एसेट एक ऐसी चीज है जो कि आपको अभी या फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट देगा. सो व्हाट आर फिजिकल एसेट्स? बिल्डिंग, लैंड, कार, मशीनरी, ये सब फिजिकल एसेट्स है. ओके, एंड कैन एनी वन ऑफ यू नेम डिजिटल एसेट्स? व्हाट डू आई मीन बाय डिजिटल एसेट्स? एनी गेसेस? डिजिटल एसेट्स क्या होंगे? लेट मी सी फ्रॉम यू. प्लीज टाइप इनटू द चैट. सॉफ्टवेयर, shares in demat account, NFTs, automation, computers, data, mutual funds, data. Okay. So let me give you some examples. So intellectual property and design. So for example, if you look at Apple, so जो design है उनके phone का या उनके PCs का, so that is a digital asset. Okay. That is the reason why we are paying so much money. Okay. So design of products. Then scalable systems and process for faster delivery and better service. If you look at Amazon, so why you want to buy from Amazon is because of their process, because of their systems. Okay, अभी आप रात को ऑर्डर देते हो, सुबह डिलीवर हो जाता है. Okay, the way they deliver, how quickly they deliver, the process they have set up, so that is an asset for them. Okay,
and in fact they can license that asset to other companies who want to do similarly. Okay, तो वो यही चीज औरों को भी सिखा सकता है. Look at online services, Uber, Urban Club, Byju's. So all these companies that are giving same service, but they have developed an online model. So you can avail of these online through app, through websites. You can order them online. So the way they have created their website and their online services, then a process that is franchisable. तो एक ऐसा प्रोसेस जो कि आप आगे किसी को भी फ्रेंचाइज पे दे सकते हो, जैसे मैकडोनल्ड बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. So these are another example of digital assets. Okay. Then curated customer database. Now these companies have had a massive database. YouTube, Facebook, MMT. That is the reason why you are advertising on them, right? आप YouTube पे advertise करते हो, आप Facebook पे advertise करते हो, because they can help you go to thousands of customers. They know their preferences. उनको पता है कि ये क्या पसंद है इनको. Similarly, Make My Trip. Okay, so then having other assets like books, blogs, tutorials, videos. So for example, Netflix. So what are the digital assets? So all the media that Netflix has, that's a digital asset. Audible के पास audio books है, books in audible format. So this is an example of digital assets. Okay, so now money, land, property, natural resources versus digital assets. Which you think is more valuable now? What do you think, guys? Physical assets or digital assets? क्या ज़्यादा valuable है? Physical की digital? So digital, of course, have become much more valuable, right? And if you look at it, all big companies are now driven by IT. Doesn't matter आप किसी भी field में हो. It doesn't matter which field you are in. चाहे वो Uber है, चाहे वो Amazon है, चाहे Byju's है, Oyo है, Airbnb है, in any category. Okay, why? Because they are digital assets, so technology has to be involved in one place or another. So you are here to learn about technology today. So what a question I would like to ask you is that how many of you would like to sell your business? Type yes or no. At some point in future, you would like to sell your business. And if you don't want to sell it anytime, just type no. So very important question to you guys, especially to the ones who are saying no. You should think about selling your business. I'm not saying that you should sell it. मैं नहीं कह रहा कि आपको बेचना चाहिए. But मैं ये बोलता हूँ कि आपको बेचने के बारे में सोचना चाहिए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Why I'm saying this is कि you should get your business evaluated. कि आप अगर सोचोगे नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या actually आपका business sellable है. Is your business actually sellable? Is it worth anything? क्योंकि आप नो करते रहोगे, बट रियलिटी क्या है कि आपको देखना है कि आपका बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस है भी कि नहीं है. इन लॉट ऑफ बिजनेसेस देयर इज हार्डली एनी एसेट दैट एनीवन कैन परचेज अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, फॉर एग्जांपल many times, अब सपोज रजत मेरे सामने बैठे हुए हैं, so रजत, don't mind, I will take your example, you are right in front of me so I can see you. so अब रजत के बिजनेस के अंदर एग्जांपल के लिए ये खुद बिजनेस सारा खुद ही ड्राइव करते हैं, एवरीथिंग ही डज ऑन हिज ओन. Okay, and today he says that I'm going to sell his business. Now I'll be very scared to buy the business because I know if Rajat is not going to come with the business, Rajat तो आ नहीं रहा business में, then how will I run this business? सब कुछ जो भी है वो रजत के दिमाग में है, everything is in his brains. So what am I buying? I am buying what? Plant, machinery, land. But tomorrow it is worthless. I can always buy new plant and machinery. Where will I get the brains from? How he's getting the orders? Okay, how he's making the production? How he's getting the employees to do the work that they have to do? Right? वही तो process है, वही तो चीज है, वही तो crux है. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है. तो बिजनेस जो है, इट्स अ इनकम जनरेटिंग एसेट. ओके, तो लाइक एनी अदर एसेट, बिजनेस भी एक इनकम जनरेटिंग एसेट है. ठीक है, आप बेचो ना बेचो वो अलग बात है, बट यू शुड थिंक अबाउट सेलिंग इट. व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट यू विल नो कि व्हाट इट इज वर्थ. सो हाउ कैन यू मेक योर बिजनेस मोर वैल्यूएबल? नाउ व्हाई एनीवन विल बाय द बिजनेस? तो फर्स्ट यू नीड टू मेक इट मोर वैल्यूएबल फॉर एनीवन एल्स टू बाय. हाउ यू कैन मेक इट मोर वैल्यूएबल? बाय क्रिएटिंग अ स्केलेबल प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस दैट समवन कैन बाय इट and they can multiply it. Okay, today, Rajat's business is in Delhi,
it is in Jaipur. Maybe because of the processes, I can set up the same business in Bangalore, in Mumbai, maybe in Bangladesh, right? So that is an asset. If someone sees कि बहुत अच्छे system बने हुए हैं, they can always look at growing the business. Then automated marketing system, a system through which leads are getting generated automatically. कल को हमारे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, अपने आप बिजनेस से सेल अपने आप आएगा, अपने आप मार्केटिंग हो रहा है. Next level online services. So everything is happening online. Because it is online, I can again grow it, again service more and more number of people because it is online. And reduce manpower cost as compared to other companies, as compared to other businesses. He is using just, 1/5 the number of people. Suppose he is using half the number of people. This means the business is very, very competitive, right? So these are some of the ways where you can actually start adding value, and I want to discuss so many other ways. तो आज हम बहुत सारे और तरीके आपको दिखाएंगे जिससे कि आप ये बिजनेस को और वैल्यूएबल बना सकते हैं.